Hello friends, myself Professor Ashok M. Jain. In this lecture BEE Unit 2, that is lecture number 2, I am going to talk about the capacitor. So we'll discuss what is a capacitor, how to charge it, derivation of it, and some numerical based on that. Okay, so what is the objective? The objective of this presentation is you will understand what is a capacitance and how to charge it. Second is what are the factors on which the value of this capacitance depends. Okay, now we'll discuss what is a capacitor. See here, what is a capacitor? It is the ability to store electrical energy in the form of electric charges, in the form of electric field, is known as capacitance. It is the ability to store electrical energy in the form of electric charges, right? Is known as capacitance. The symbol used for this capacitance is C. Okay, the device possessing the capacitance is called as capacitor. The device possessing the capacitance, that is the ability to store the electrical energy in the form of charge, called as capacitor, and the device possessing capacitance called as capacitor. So what is that capacitor? You can see here. These are the two plates. You can see here. This is these two. ये जो प्लेट है ना, ये एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, राइट. We have two plates, conducting plates. They are electrically neutral. इसका मतलब क्या है? Positive charge and negative charge on this plate, and positive charge and negative charge on this plate will be equal. Clear? These two are called as leads. You can say this and this, right? These two are called as leads, and these two plates are separating by some insulating medium. इसको क्या बोलते हैं? Dielectric medium. Okay, so in this form it will form a capacitance. What is a capacitor? It is consisting two metallic plate which are electrically neutral, and these two plates are separated by some insulating material that is called as dielectric material. Clear? So it will form a capacitor, right? Now we'll discuss what is a capacitance and how to charge it. So just I'm going to rub it first. Okay, next slide I'm going to go. This is the formation of capacitor and nature of capacitance, right? So you can say this is the one plate, this is another plate. These two are separated by some dielectric medium, maybe air. Okay, that is called insulating medium, or air may be there, and ये these two are called as leads. यहाँ हम क्या लगाने वाले? Source, voltage source. अच्छा, okay, so you can say here when we connect the voltage source, क्या हो जाएगा? One plate will become positively charged, another will become negatively charged. हो क्या रहा है? देखो, just see here. I am going to show here. This is one plate. It is another plate, and these are the leads, right? And when we connect the source here, I am connecting the voltage source here. So actually ये plate क्या है? This is charges are, it is electrically neutral, positive, negative, positive, negative charge equal. Here also positive, negative, positive, negative, positive, negative. I can say these two plates, metallic plate, are electrically neutral. Why it is negative, electrically neutral? Positive, negative charge are equal, right? जैसे ही आप source लगाएंगे, when we connect the source, current will flow. Current flow होगा, maybe very small amount of current can flow from here. Flow of current means ये जो negative charge है, ये this will move in this way direction, opposite to the direction of current. So यहाँ का positive charge यहाँ आ जाएगा. So this will become highly positive, or this will become highly negative. You can say इस प्लेट के across से 1 volt डेवलप हो गया. 1 volt
maybe 0.5 volt. This is for example. Small voltage will be developed. In this way, capacitor will be charged. थोड़ी देर में और क्या हो जाएगा, ये negative, this will become highly negative, this will become highly positive. In place of 1 volt, let us say 2 volt आ गया. Clear? It is not a 1 volt or 2 volt. It is just example. Again, continuously current flow हो रहा है. Charges are transferring from, this will become highly negative, this will become highly positive, highly negative, highly positive. In this way, capacitor will be charged. 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, 4.5 volt, 4.75 volt, 5 volt. सपोज करो ये अगर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आएगा अक्रॉस कैपेसिटर, नॉट मोर देन 10, अप टू 10 वोल्ट तक ये कैपेसिटर चार्ज हो सकता है. ओके, सो अगर यहाँ पर 10 वोल्ट है, यह सप्लाई वोल्टेज, तो कैपेसिटर में भी चार्ज अप टू 10 वोल्ट एंड उसके ऊपर जाएगा ही नहीं. और जैसे चार्ज होगा तो व्हाट इज द करंट फ्लोइंग हियर, करंट फ्लो विल डिक्रीज. क्यों डिक्रीज होगा, पहले करंट क्यों फ्लो हो रहा था, 10 माइनस 0 वोल्ट, तो आई कितना था, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 0. थोड़ी देर बाद क्या आएगा, 10 माइनस 1 अपॉन सम आर, अपॉन सम आर. अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, 10 माइनस 2 upon r, and in this way capacitor will be charged, but the flow of current will be upon r, 8 upon r, and finally जब कैपेसिटर चार्ज होगा up to 10 वोल्ट, so क्या आएगा 10 minus 10 upon r, that is 0. so करंट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा करंट will reduce. clear? so initially it will, charging will be faster and slowly this charging will be reduced. that is the way of charging the capacitor. so everything is written here. मैं यहाँ पिछले स्लाइड में भी लिखा है कि सप्लाई वोल्टेज V है, E है और ये V है. तो E तो कांस्टेंट है बट V कम बढ़ता जाएगा और जैसे ही V इक्वल टू E के बराबर होगा कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, स्टॉप. ओके, this is the way of charging the capacitor. okay, I'm scrubbing it. okay, next slide. so यहाँ पर लिखा है मैंने, what is a capacitance. what is a capacitance, when we connect the voltage source between the plates. last slide में मैंने I show it. okay, when we connect the voltage source between the plates, the amount of negative charge Q stored on negative plate and exactly equal to the positive charge on the positive plate. Hence, voltage V is developed across the capacitor as a result of charge stored on its plate. The voltage across the capacitor opposes the battery voltage E. क्योंकि बैटरी वोल्टेज ई 10 वोल्ट है, कांस्टेंट है, और यहाँ कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो रहा है 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 3 वोल्ट. so that capacitor voltage opposes the battery voltage E. as charge build up on the plates, the voltage across capacitor increases. when the charge becomes so large that V equal to E, और V अगर E के बराबर हो गया तो क्या होगा, no more electrons can flow from battery because V is equal and opposite to E. the capacitor is said to be fully charged, right? and no current can flow in either direction now. so okay, now what is a capacitance, please? what is a capacitance? Capacitance is defined as the ratio of charge stored by the capacitor to the voltage across it. इसका मतलब है capacitance C equal to, capacitance is defined as the ratio of charge stored Q to the voltage across it, Q by V. that is the definition of C, Q by V. Q मतलब coulombs per volt, इसका यूनिट क्या होगा, coulombs per volt, right? this is the coulombs per volt. R इसकी दूसरी यूनिट क्या है, farad. okay, so unit of capacitance is
farad or coulombs per volt. So capacitance is defined as the ratio of charge stored by the capacitor to the voltage across it, and is defined as the property of the capacitor to store electrical energy called as capacitance. It is a property of the capacitor to store electrical energy. See here, Q is directly proportional to V. याद रखना, more the Q, if voltage सप्लाई वोल्टेज ज्यादा है तो ही Q ज्यादा रहेगा. सप्लाई वोल्टेज 1 वोल्ट लगाया आपने बैटरी का क्रॉस का वोल्ट, तो Q नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर विल बी लेस, Q कम होंगे. लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे सप्लाई वोल्टेज Q विल इंक्रीज. सो Q is proportional to V, right? Or Q equal to one constant of proportionality called as C. Clear? So Q equal to CV. This formula is very, very important. Everywhere we are going to use this formula. You are studying from 9th, 10th classes also, but this formula is very, very important. Everywhere in final exam, suppose GATE exam, in some competitive exam, कैपेसिटर के ऊपर प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू CV. अगर आपको ये फार्मूला याद है, यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो Q इज proportional to V or one constant of proportionality C, so Q equal to CV. So C equal to क्या हो जाएगा, Q upon V. C equal to what? Q upon V. Q is the okay coulomb per volt और farad इसके यूनिट हो जाएगा. So how to define C? How to define C? 1 farad define करना है, तो 1 farad is that amount. 1 farad is that amount of capacitance of a capacitor which store 1 coulomb of charge when voltage across the capacitor is 1 volt. अगर ये 1 coulomb है, 1 volt है, तो क्या आएगा, 1 coulomb per 1 volt equal to 1 farad. So 1 farad is the charge. Clear? 1 farad is the amount of capacitance of a capacitor which stores 1 coulomb of charge when the voltage across the capacitor is 1 volt. So that is the way of defining it. Next slide. Sorry. Next slide. Expressions for parallel plate capacitor. So I am assuming this is the two plates. These are the one plate. Clear? And it is another plate. And this is the distance between these two plates. And in दोनों plate के बीच में क्या है? Some dielectric material, some insulating material. Clear? The distance between these two plates is d meter. I am assuming it is a distance separation between the two plates is d. Here between this plate and this plate is d meter. And area of each plate, the area of each plate, this area of this plate is a meter square. इसका भी area same रहेगा. It is not a different. Clear? So this is the parallel plate capacitor. Only दो plate हैं. It is called as parallel plate capacitor. Clear? Area of each plate is a meter square, and these two plates are separated by distance of d meter. I am writing in MKS system. Clear? And here this is the material, insulating material. The relative permittivity of this material is epsilon r. Okay, so we are going to drive the formula. Now intensity, first of all intensity. So एक काम करता हूँ, I'm going to drive this formula just like a capacitor. Magnetic circuit. So magnetic circuit में क्या हुआ था, we'll discuss that. And then just here in magnetic circuit, flux density, it was B. B equal to क्या होता था, flux upon area. Clear? B was proportional to the H. P equal to mu 0 mu r H. H is the magnetic field strength, H. Okay, so B equal to mu 0 mu r. H equal to क्या था,
MMF H equal to MMF Ni upon L. It was there in the magnetic circuit, right? On the same lines, I'm going to develop the formula for C in electric circuit. So first of all, flux density यहाँ represent करते हैं. It is represented by D equal to Q upon A. फ्लक्स अपॉन एरिया, यहाँ फ्लक्स मतलब क्या मूव होता है, चार्जेस, Q अपॉन A. B मतलब क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू दिस फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. H is the electric field, magnetic field intensity, यहाँ electric field intensity E is there, clear. And E इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. D इक्वल टू होता है फ्लक्स डेंसिटी, क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी Q अपॉन A इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. E इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होता है, इंटेंसिटी H इक्वल टू क्या है, Ni MMF अपॉन L. यहाँ है फार्मूला वी हैव डिस्कस, V अपॉन D, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट. Q इक्वल टू क्या होता है, CV अपॉन A इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R V by D. V will be cancelled, right? तो C के क्या फार्मूला आया, we got the formula for C equal to एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R. A यहाँ आएगा A by D. This is the formula for parallel plate capacitor. So we can get it from there, clear. So this is the way of driving the formula for parallel plate capacitor C equal to epsilon 0 epsilon R A by D. Just I am coming back here. So this is the parallel plate capacitor. This is positively charged, this is negatively charged. Area of each plate is A meter square. The distance between the two plates is D, and the material here is epsilon R. Okay, thus the electric field intensity is directly proportional to the potential difference V by D. We have, I told you already, E electric field intensity equal to V upon D. So we know electric flux density is designated by D equal to क्या होता है, electric field intensity D equal to Q upon A, and D is proportional to E also. So D equal to epsilon 0 epsilon R E. So D equal to epsilon 0 epsilon R E equal to क्या होता है, V by D, और D equal to क्या होता है, Q upon A. Q equal to CV upon A. तो V will be cancelled. You will get C equal to epsilon 0 epsilon R A by D. This I told you already, right? Now what are the factors on which C depends? What are the factors? This is the derivation. What are the factors on C depends? So this derivation is very, very important. Everywhere it will be required, clear? And sub formula is very, very important. And factors on which C depends, it is again very important. So you can observe this formula. C depends on what? Area of plate. देखो पहला फैक्टर, C depends on area of plate. If the area of plate is more the area, more the C. इसका मतलब है अगर आपका प्लेट एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, प्लेट एरिया ज्यादा है तो क्या होगा, C will be more or less, C will be more. Second, D means what? Distance between the two plates, the spacing of the plates. More the spacing, more ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, more the D, C will be less. So spacing of the plate is अगर ज्यादा है तो capacitance C will reduce. Third, what is the type of material? कौन सा मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मीडियम. एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 का किसके लिए, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए. तो एप्सिलॉन आर अगर 1 है तो सी विल बी कम होगा, ठीक है. लेकिन एप्सिलॉन अगर आपका आर, अगर मटेरियल अगर आपने एक के बदले में 5 एप्सिलॉन आर दूसरा मटेरियल लिया है, उसका एप्सिलॉन आर 5 है तो सी विल बी 5 टाइम्स.
अगर एप्सिलॉन आर 10 है तो सी विल बी 10 टाइम्स ऑफ एयर। तो क्लियर। तो सबसे ज्यादा सी कहाँ कम, सबसे कम सी कहाँ होता है, एयर के लिए। और उसके बाद जैसे जैसे दूसरा मटेरियल यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम, सी विल इंक्रीज, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। सो टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज्ड, so C depends on these three factors, A, D and epsilon R means material or nature of medium. So these are the questions examiner may ask, right? I am rubbing it. Now next I am going to discuss some numerical based on that. So you can see here numerical number 1, a 6 volt battery required to store 24 microcoulombs, please. वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, कितना चार्ज स्टोर कर रहा है, 24 माइक्रोकूलम ऑन ए सर्टेन कैपेसिटर। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, सी की वैल्यू पूछा, सी इक्वल टू व्हाट, क्यू ऑफ सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू व्हाट, क्यू इक्वल टू सी वी, सो क्यू अपॉन वी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है ना फार्मूला, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो सी इक्वल टू व्हाट, what is the capacitor of the capacitance, q upon v, q कितना है 24 माइक्रोकूलम, माइक्रो मींस माइनस 6, v इक्वल टू कितना है 6 वोल्ट, सो 24 माइक्रोकूलम अपॉन 6 you will get 4 माइक्रो फेराड, 4 into 10 raised to power minus 6 farad या 4 microfarad, that is the first answer. Clear? Second, how much charge is stored on the capacitor when 9 volt source is connected across it? In place of 6 volt, now it is 9 volt. अगर 9 वोल्ट कर दोगे तो सी चेंज हो जाएगा, नहीं, सी तो वही था, कैपेसिटर वाज सेम, वोल्टेज चेंज होगा तो क्यू में भी चेंज, बट सी विल नॉट बी चेंज। सो ये आपका फर्स्ट आंसर आपको मिल चुका है, वो सेम रहेगा। तो बी में क्या है, 6 के बदले में 9 हो गया, तो क्यू इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर सेकंड में क्यू इक्वल टू व्हाट, सी वी, क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू सी कितना है 4 माइक्रोफैराड, 4 into 10 raised to power minus 6, V कितना अप्लाई कर रहे हैं आप 9 वोल्ट, तो ऑटोमेटिकली Q विल बी 36 माइक्रोकूलम आ जाएगा, 4 into 9 36 माइक्रोकूलम, राइट। सेकंड आंसर। थर्ड आंसर क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन 16 माइक्रोकूलम इज द स्टोर्ड ऑन इट। अभी ये 36 तक जा रहा था, लेकिन 16 माइक्रोकूलम स्टोर करने के लिए कितना वोल्टेज चेंज करना है, सी सेम होगा कि डिफरेंट, सी सेम है, वो कैपेसिटर बदलने के वाला नहीं है। क्लियर। सो क्यू इक्वल टू व्हाट, वोल्टेज, वोल्टेज निकालना है ना, व्हाट इज द वोल्टेज, वी, क्यू इक्वल टू सी वी, तो वी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन सी, राइट, क्यू इक्वल टू सी वी, फार्मूला वी नो इट, सो वी इक्वल टू व्हाट, क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी, क्यू कितना है 16 माइक्रोकूलम फॉर पार्ट सी, 16 माइक्रोकूलम, और सी कितना है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रोफैराड सॉरी, तो -6 कैंसिल, 16 अपॉन 4 इज 4 वोल्ट। सो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है कि इक्वल टू सी वी, यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। यू एक ही कंसेप्ट है, एक आपको फार्मूला याद होने चाहिए, दूसरा क्या है आपका, क्या फार्मूला, कैलकुलेटर प्रॉपर ऑपरेट करना है, और तीसरा यू हैव टू रीड प्रॉब्लम केयरफुली, एक एक बिट करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। तीन चीजें आपको याद रखना है, यू हैव टू रीड प्रॉब्लम केयरफुली, you must know the formulas and you have to operate your calculator properly. ठीक है, okay, so I'm rubbing it. Second numerical I'm going to talk, example number 2, a capacitor, just wait, a capacitor is made up of aluminum plate of area 10 raised to power minus 2. This is the area of plate दिया 10 raised to power minus 2 meter square, and the distance of separation between them is 1.5 centimeter. D दिया है, distance between separation small d 1.5 centimeter. I don't want to write in centimeter, I want to convert into meter. So 1.5 centimeter into 10 raised to power minus 2 मीटर में आ जाएगा ये क्लियर ना। So I'll do it, okay.
Okay, if the space between the plate is filled with the dielectric material which has a relative permittivity 4, okay, sorry, the medium is air. पहला पार्ट क्या है? The medium is air. अगर एयर मीडियम है तो एप्सिलॉन आर कितना है? 1 है. What is the capacitance? You have to find C. तो पहला पार्ट C निकालना. C equal to what? Know the formula. C equal to what? Epsilon 0 epsilon r A by D. एप्सिलॉन 0 क्या होता है? 8.854 इंटू 10⁻⁻12. एप्सिलॉन आर क्या है एयर के लिए? 1. क्लियर? 1. एंड एरिया कितना है? समथिंग इज रॉन्ग एक्चुअली. एरिया आई हैव टेकन 10⁻⁻2. ओके, दिया है 10⁻⁻2. क्लियर? एंड डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कितना है? 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 into 10⁻⁻2 meter. I don't want to write in centimeter. I have to solve the problem in MKS system, meter, kg, second system. So convert into this -2, right? So epsilon 0, epsilon r, A by D. You will get this answer. 5.9 into 10⁻⁻2, 12. Sorry, farad. And 10⁻⁻12 होता है pico. 10⁻⁻6 होता है माइक्रो. 10⁻³ होता है मिली. 10 ओके. सो 10⁻9 होता है -9 होता है नैनो. -12 क्या होता है पिको. सो दिस इज 5.902 पिको फेराड. दैट इज द फर्स्ट आंसर. अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच हैज रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 4. इन प्लेस ऑफ 1 इट इज 4. ठीक है ना? दूसरा मटेरियल डाल दिया एयर के बदले में तो यहाँ 4 हो गया. 4 हो गया तो सी 4 टाइम से बढ़ जाएगा ना. तो एप्सिलॉन 0 यहाँ पर 4 टाइम से रख के रखो या डायरेक्टली इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ अगर आपको इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 20. इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यू विल गेट दिस आंसर. या फिर यहाँ 4 रखो. एवरीथिंग इज सेम, ओनली एक के बदले में 4 आ गया. You will get 23.61 picofarad. Okay, so I'm rubbing it. One more problem I'm going to discuss. Problem number 3. This is the problem number 3 I have. A potential difference of 10 kilovolt. Voltage is given 10 kilovolt is applied to the terminals of the capacitor consisting of two circular plate. ये जो कैपेसिटर है इसकी जो प्लेट है सर्कुलर है. क्लियर ना? ओके. Having the two circular plates each having the area of 100 centimeter square. So I have the area of plate 100 centimeter square. So I don't want in centimeter square. I will convert it to meter square. So 100 into centimeter square मतलब -10⁻⁻4. So this is the area of plate is given 100 into 10⁻⁻4 meter square. Voltage कितना है अप्लाई किया? 10 kV. 10 kV मतलब 10,000 volt. 10 into kV मतलब 1000 volt, kilovolt. So it is 10,000 volt. Voltage is given, area is given, right? Separated by a dielectric 1 mm. D is given. Distance between the plate is given 1 mm. 1 mm मतलब 1 into 10⁻³ meter. So D is also given. If the capacitance is 3 into 10⁻⁻4 microfarad, C is given. 3 into 10⁻⁻4 microfarad मतलब 3 into 10⁻⁻4 into micro means -6. तो कितना हो जाएगा? -10 हो जाएगा ये. Okay, so C is also given. Okay, calculate electric flux density. Sorry, electric flux in the coulomb. पहला Q equal to what? Electric flux coulomb क्या होता है? Q equal to CV. Q equal to CV. C कितना दिया है? 3 into 10⁻⁻10 -4 और -6 -10. C. V is given कितना है? 10,000. ये 10 kV मतलब 10,000.
तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, Q इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम या 3 माइक्रो कूलम, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन द फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D होता है, D इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू Q फ्लक्स अपॉन एरिया ना, Q अपॉन A, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया, ऐसे ही सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D इक्वल टू Q अपॉन A, Q दिया है कितना, ये 3 इंटू 10⁻⁻6, एरिया दिया है, एरिया वाज गिवन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर मीन 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट की, डायरेक्टली यू विल गेट 3 इंटू 10⁻⁴ कूलम्स पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था ना मीटर स्क्वायर में, सो कूलम्स पर मीटर स्क्वायर। थर्ड क्या है, कैलकुलेट द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, C इज गिवन, D area is given, D is given, so we know this formula, C equal to epsilon 0 epsilon R A by D, C is given, कितना है C, it was 3 into 10⁻⁻4 microcoulombs, so this is given 3 into 10⁻⁻4 माइक्रो का मतलब -6, तो ये C दिया है, epsilon 0 you know कितना होता है 8.854 into 10⁻12, epsilon R we have to calculate, area is given 100 centimeter square, 100 into 10⁻⁻4, D is the distance between the plate is given 1 mm दिया है, 1 mm मतलब 1 into 10⁻3, everything is given, you have to operate your calculator properly, you will get epsilon R is 3.388, just you have to read the problem carefully, second you have to operate your calculator properly, you will get it, you have to read the problem carefully, you must know the formulas, okay, and you have to operate your calculator, सबसे प्रॉब्लम अगर सब कुछ मालूम है और you are not getting your answer, इसका मतलब है you are not operating your calculator properly, okay, so I'm rubbing it, so we have discussed the three numericals, clear. Now the assignment I'm going to talk, what is the capacitance and how to charge the capacitor. We have written what is a capacitance, it is given there, and how to charge it, right. Derive the formula for parallel plate capacitor, that is very very important, clear. And third is the what are the factors on which the value of capacitance depends. So this is the assignment, okay. Thank you very much for listening me carefully.